In this question, a cylinder of volume V is equal to 10 liter made by adiabatic walls containing M is equal to mass is equal to 8 gram of helium gas is divided into two parts by a thin fixed rigid membrane. So this is a thin rigid and fixed membrane. Volume of the right part is eta is equal to 2 times of the volume of the left part. An electric heater of constant power, okay, so these are the keywords, constant power, installed in the left part is switched on. Due to finite thermal conductivity of the membrane, heat passes from the left part into the right part. Heat transfer rate through the membrane is H is equal to 0.2 watt per 1 degree Celsius. That means for a unit temperature difference, for a per unit temperature difference, the rate of heat flow through this membrane is 0.2 watt across the membrane. Initially the heater was switched off and both the parts were in thermal as well as mechanical equilibrium. So both were in thermal equilibrium. Thermal equilibrium means the temperatures are same, and mechanical equilibrium we will say that pressures are same. Okay, so there is no difference in pressure initially. The membrane can withstand a maximum pressure difference of delta P, which is given as 1000 Pascal. Find the maximum power of the heater so that the membrane remains intact. So how the membrane will remain intact when the pressure difference is below this thing, 1000 Pascal. Molar mass of the helium is capital M, 4 gram. Consider the slow heating process. Okay, so let's see how to do this. So I have drawn the diagram in two stages. So ये जो stage है, this is the initial stage, and I have taken this as some intermediate. किसी बीच वाले stage पे it is something like this. तो इनिशियली यहाँ पे टेम्परेचर्स इक्वल है दोनों साइड में, जैसा क्वेश्चन में बताया गया, एंड द प्रेशर्स आर ऑल्सो इक्वल. और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेशियो इज़ 1 eta. तो आई हैव डिवाइडेड द वॉल्यूम इन रेशियो 1 eta. सो दिस विल बी V, टोटल वॉल्यूम इज़ V, सो दिस विल बी V डिवाइडेड बाय eta + 1. और ये जो वॉल्यूम है eta टाइम्स हो जाएगा, तो eta टाइम्स V डिवाइड बाय eta + 1. दोनों साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स है इनिशियली N1 N2, और ऑब्वियसली की प्रेशर एंड टेम्परेचर्स बोथ आर इक्वल. तो फ्रॉम PV इज इक्वल टू NRT, अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT यूज़ करूँ तो वॉल्यूम एंड मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो नंबर ऑफ मोल्स अगर टोटल n है, अगर ठीक है, फॉर n वी हैव दिस रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज n and this is small m by capital M. Small m is the actual mass of the gas and capital M is the molecular mass. So I can find N1. N1 will be the n and factor will be eta + 1 divided by it is eta + 1 in the denominator, and the number of moles on this side. So number of moles on this side is n eta divided by eta + 1. Okay, so these are the moles on the two sides. So whatever the ratio of volume is, the same ratio will be for the number of moles, क्योंकि PV is equal to NRT and volume is directly proportional to the number of moles होना चाहिए यहाँ पे. So this is the initial situation, and what is the situation at some intermediate, किसी बीच के टाइम पे यहाँ पे जो डायग्राम है, that diagram will look like this, कि सपोज जो ये स्मॉल q है, दिस स्मॉल q इज़ द रेट, ये वो रेट है जिससे हीटर हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ द रेट ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर वी कैन से. और पूरी हीट इसके पास में अभी जैसे स्टार्टिंग में तो क्या है कि देर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस. सो इनिशियली देर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस, और जो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे. तो मैंने यहाँ पे किसी टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म्स में किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ आई हैव रिटन. तो जो क्वेश्चन में जैसे दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया था कि पर यूनिट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय 0.2. तो दिस इज़ 0.2 फॉर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टेम्परेचर डिफरेंस H को, तो आई विल गेट दी टेम्परेचर, आई विल गेट दी हीट ट्रांसफ़र व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज T1 - T2. तो जब T1 - T2 है तो दिस इज़ दी हीट ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम थ्रू दिस मेम्ब्रेन. तो इनिशियली ऑब्वियसली कि टेम्परेचर्स आर इक्वल, तो टेम्परेचर्स इक्वल हैं तो देर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र. ओके, और जब हीट इधर आने लग जाएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाएगा इसका, और इट विल क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स. अगर दोनों साइड पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस मेम्ब्रेन. और ऑब्वियसली कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो लो होगा, तो इधर जो रेट हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो स्टार्टिंग में लो होगा. ऑब्वियस है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है वो स्टार्टिंग में
ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने का रेट वी कैन से कि कम ही रहेगा। तो ऑब्वियसली कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये ज़्यादा रेट से बढ़ेगा, ये कम रेट से बढ़ेगा, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस विल इंक्रीज़। तो दोनों साइड के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा और अकॉर्डिंगली जो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन हियर। तो ये एक हो गया यहाँ पे इसमें। अब इसके बाद में हाउ टू सॉल्व दिस सिचुएशन, सो आई एम गोइंग इनटू अनदर डायग्राम। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। तो व्हाट आई विल डू एट किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे आई विल मेक सम इक्वेशंस। तो इक्वेशंस जैसे यहाँ पे ऑल दी वॉल्स आर एडियाबेटिक, तो वॉल्स के थ्रू कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं है। जो भी हीट का ट्रांसफ़र है वो उसके लिए हीटर है और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। कुछ हीट यहाँ से आ रही है, उसका कुछ पार्ट इधर चला जा रहा है यहाँ पे, और वो पार्ट कितना होगा तो दैट पार्ट आई कैन डिटरमाइन फ्रॉम हियर कि इस रेट से हीट जो है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। और जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस इसमें हो चाहे इसमें हो, बिकॉज दिस इज़ अ फिक्स्ड रिजिड मेम्ब्रेन, सो वॉल्यूम ऑन बोथ द साइड्स विल बी फिक्स्ड, वॉल्यूम कांस्टेंट। सो द प्रोसेस इज basically constant volume process, isochoric process. So for the left side, if I write, okay, so let's write for the left side. So for left, so this is the net rate of heat in the left, dq1 by dt, and I can write this equal to, because this is isochoric process. For isochoric process, dq can be written as ncv/dt. Okay, in general I can write this dq is equal to ncv/dt, and this is because helium gas, so cv is equal to, this is monatomic. For monatomic we know that cv is equal to 3r by 2. So I can use the number of moles on this side, n1. So n1 is what? So I've written n1, this is equal to the number of moles, total number of moles, and divided by this eta plus 1. Okay, and 3r by 2 will also come here. एंड टेम्परेचर को मैं डिनोट कर रहा हूँ T1 से, तो dt1 by dt. ओके, एंड दिस रेट, दिस dq1 by dt, दिस dq1 by dt शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्चुअली में इसे हीट आ तो रही है, लेकिन ये जैसे इस रेट से हीट आ रही है, कुछ पार्ट हीट का इधर चला भी जा रहा है, तो व्हाट इज़ द नेट हीट, ओके, विच दिस पार्ट इज़ गेटिंग, सो नेट रेट ऑफ हीट, तो Q, दिस इज़ द रेट एट विच द हीटर इज प्रोवाइडिंग हीट, और उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा मुझे, एंड H, और ये T1 minus T2. ओके, T1 minus T2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस एट एनी इंटरमीडिएट टाइम. तो दिस इज dq1 by dt. नाउ आई विल यूज दिस इक्वेशन फॉर राइट साइड. So on right side I can write dq2 by dt in the similar manner, and the number of moles eta divided by eta plus 1, m by capital M, okay, 3r by 2, and temperature is denoted by T2, so dt2 by dt. Now it is getting heat, okay, so it is getting heat only, it is not losing any heat, so simply H T1 minus T2. So basically this red arrow, what it denotes? It denotes this red arrow denotes H into T1 minus T2. Okay, so let's proceed further. तो अब आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसमें एवरीथिंग इज़ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हियर. तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का यूज़ करके टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म्स में इसको ले आता हूँ, ठीक है. तो ऑल द टर्म्स आर लुकिंग सिमिलर, ओनली दिस डिफरेंस इज देयर, दिस ईटा इज़ कमिंग हियर, there is no eta here. Okay, so divide by eta from इस eta से यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, और सारे टर्म्स इधर के सेम हो जाएंगे, और इधर के दोनों टर्म्स सेम हो जाने के बाद में आई विल टेक द डिफरेंस. ओके, सो टेक दिस eta on this side, so I am taking this eta on this side. Okay, so it will go into denominator, and after doing this what I will get this kind of equation, 1 divided by eta plus 1 m by m 3r by 2 d2 by dt. This is h upon eta T1 minus T2. Okay, so this is the equation number 1, let's say, and this is, let's say, equation number 2. And what I will do, I will take the difference of these equations. Okay, so let's take the difference of 1 and 2. So if I take the difference, okay, so after taking difference 1 minus 2, okay,
So from 1 minus 2 what I will get, this will be 1 upon eta plus 1 m by m 3r by 2, all these terms will be there, and it will be d by dt of t1 minus t2. Okay, so I am now successful in generating this term, and this will be q minus h t1 minus t2 and minus h by eta t1 minus t2. Okay, so this is going to be the term on this side. Now what I can do, इसमें यहाँ पे अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो कि टी वन माइनस टी टू जो है ना, इसको आप टी लिख लो, ठीक है. सिंपली आई एम राइटिंग दिस टी वेयर टी इज़ टी वन माइनस टी टू, सो दैट की जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा सिंपल लगेगा यहाँ से फिर, ठीक है. तो लेट्स डू दिस. तो इसमें यहाँ पर ये 3r स्मॉल m divided by 2 capital M, and this is eta plus 1, and it will be dt by dt. Okay, so where t is basically t1 minus t2 here, and it will be q minus, so now you can take ht as common, so it will be 1 plus 1 by eta. Okay, so this is this kind of thing. Now if you observe this equation, okay, if you observe this equation, you can take this on that side and do the algebra. तो ये इक्वेशन को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करो. दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस. ओके, सो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने की कोशिश करो. दिस इक्वेशन इज बेसिकली आफ्टर मैनिपुलेशन यू कैन ब्रिंग दिस इक्वेशन लाइक दिस. ओके, सो इट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस. और अगर आप इसको कुछ ऐसे लिख रहे हो तो इस तरह की इक्वेशन को जो आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से x जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला आता है. x की लिमिट आप कुछ 0 से x यहाँ पे यूज़ कर लो, टाइम की लिमिट कुछ 0 से t. तो जनरली हमें इस तरीके का पता होना चाहिए डायरेक्टली कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन एक एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है. सो दिस इज़ एक्सपोनेंशियल. इफ़ यू गो फर्दर, सो इन दैट केस यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. So this is of this format, some kind of this a by b 1 minus a raised to power minus bt, something like this. Okay, so इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्मेट का होता है. तो हमें वैसे उतना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू लुक दिस इक्वेशन. ओके, सो जस्ट सी दिस इक्वेशन. तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि dt by dt, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स. दोनों साइड में किस रेट से टेम्परेचर का डिफरेंस चेंज हो रहा है. इट इज़ नॉट टेम्परेचर, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. और इनिशियली ऑब्वियस है कि दिस थिंग इज़ कांस्टेंट. जो आपका हीटर है, हीटर क्यू कांस्टेंट रेट से हीट प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो टी है टेम्परेचर का डिफरेंस है दैट इज़ इंक्रीजिंग. तो जो dt by dt है दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है दिस टर्म इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज t डिफरेंस इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. एंड कभी ना कभी ये होगा कि क्योंकि दिस इज़ कांस्टेंट एंड दिस टर्म इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, so this two term will be equal. Okay, so this term and this term will be equal, and with these two will be equal, so dt by dt will be 0, and there will be steady state. उसको हम steady state बोल सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो फिक्स हो गया. इसका जो ग्राफ होता है, इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, इनके ग्राफ समथिंग लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है x वर्सेस t, तो अल्टीमेटली ये कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेता है. ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और वो तब होगा व्हेन dt by dt इज 0. ओके, सो नाउ वी हैव कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट. सो इन स्टेडी स्टेट दिस dt by dt विल डेफिनेटली बिकम 0. कभी ना कभी ये 0 हो जाएगा. दैट इज़ मैथमेटिकली इट इज़ t टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, 40 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बी 0. दैट विल बी स्टेडी स्टेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नाउ if dt by dt is 0, this is 0, so this thing is equal to this thing, so just equate this two. Okay, so let's say equating this two, q is equal to this is h eta plus 1 divided by eta into this t, and t is the temperature difference. I am writing this as t1 minus t2 again, so this is basically the temperature difference. Okay, now what the question is asking, क्वेश्चन में आखिर हमें निकालना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पावर पी मैक्स, कि हीटर की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, सो दैट कि मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, एंड व्हेन मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट when the pressure difference on the two sides is less than this quantity. Okay, so it can be the maximum possible pressure difference on the two sides. So let's see.
तो यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अब मुझे प्रेशर का डिफरेंस देखना पड़ेगा, दोनों साइड में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो उसका एक्सप्रेशन। तो आप प्रेशर का डिफरेंस लाना चाहते हो, टेम्परेचर को यहाँ से आप प्रेशर के टर्म्स में ले आओ, ठीक है। तो टेम्परेचर इज़ T इज़ इक्वल टू PV/NR। So on the left side pressure is P1 and volume is this V divided by eta plus 1. This is the volume. And NR, number of moles here M by M, and again the same factor, so this factor will be cancelled. Okay, so in this way you can find T1, and in the similar way you can also write T2. So P2 eta V divided by eta plus 1 divided by this number of moles, and this factor will be there. So this factor again will be cancelled, this factor will be cancelled. So you can see P1 and P2, T1 and T2 if you put in this equation. So let's put in this equation. So Q, this is the constant rate at which the heater is providing heat. So H eta plus 1 divided by eta. So if you put T1 T2, so finally all these terms will be like this: V capital M small m into R, and it will be P1 minus P2. So you can bring this equation like this. So in terms of P1 minus P2, so you can see यहाँ से ये जो हीट है, दिस हीटर की जो हीट है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो T1 माइनस T2, और फिर T1 माइनस T2 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस P1 माइनस P2। ओके, सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन। सो अब ये जो इक्वेशन फाइनली यहाँ पे आ रही है, तो इस इक्वेशन से व्हाट वी कैन कंक्लूजन यहाँ से क्या है कि ये बेसिकली P1 माइनस P2 या जो T1 माइनस T2 इस इक्वेशन में दिख रहे हैं, ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस है और ये स्टेडी स्टेट प्रेशर डिफरेंस है। अब प्रेशर में डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है, और प्रेशर में जो डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा होगा अगर Q को इंक्रीज़ किया जाए। अगर Q इंक्रीज़ करते हैं तो P1 माइनस P2 दोनों साइड का टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस को आप मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हो, तो डेट इज़ डेल्टा P। ओके, डेल्टा P विच इज़ 1000, ओके 1000 पास्कल। और अगर मैं प्रेशर का मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो दैट विल गिव मी द मैक्सिमम हीट rate by the heater. Okay, so that will be the P max. So now it's simple now, so just put the values. So P max, so all this will come HVM by MR eta plus 1 divided by eta, and for P1 minus P2 we need to put the values delta P. Okay, so this will be delta P. Okay, so this is the final answer to this problem. This is the maximum power of heater.